Assalamu alaikum dear viewers, hope you are fine. I am Sabreen here with the new grammar topic abstract noun. Dear, don't think it's a burden for you if you are learning day by day new concept. Actually, you feel relaxation after learning these concepts because these topics not belong only with the English but also with other subjects like physics, chemistry, bio and mathematics. We cannot understand the concept of other subjects if we don't have the concept of English grammar. So it's must for us to understand this. As you can see here, our topic is abstract noun. There are some examples are given also here: honesty, wisdom, theft and childhood. So why I also given here, actually these are the words honesty, wisdom and the theft, childhood. We can describe with our tongue, we cannot touch, we cannot see with our eyes. So these are the words are called abstract noun. Further, let's take its definition. Abstract noun definition is: abstract nouns describe ideas rather than things we can see, hear or touch. Many abstract nouns are made with the suffixes ship, hood, meant, it and ness. So I have already told about this, that the things we cannot touch or see, we can only describe, are called abstract noun. Dear, I explained it with the help of 3 tips. How can we make abstract noun? So first one is noun plus fix. As you can see here, 3 columns are given. In the first column in noun, friends, child, slave and boy. The second column fixes are given: ship, hood, tree and hood. And in the third column abstract nouns are given. So we can make it with combining first 2 columns, noun plus fix. Friend plus sheep, as you know, friend is noun and sheep is a fix. So friend plus sheep becomes an abstract noun, friendship. Child plus hood, combine and make abstract noun, childhood. Slave plus ray, it's become abstract noun, slavery. Boy plus hood, it's become abstract noun, boyhood. जब हमने इन नाउन को और सफिक्स को आपस में कंबाइन किया तो तब हमने इसकी हेल्प से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया. इट मीन्स के सफिक्स आर वेरी कंपल्सरी फॉर मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लेट्स टेक नेक्स्ट टिप. The second tip is verb plus suffix. So you can see here verbs are given: enjoy, laugh, move and produce. Suffixes are also given: mentor, mention and the abstract noun also given. How can we make verb plus and suffix with the help of this abstract noun? Enjoy plus meant. As you can see here, enjoy is verb and suffix is given here, meant. So enjoy plus meant become abstract noun, enjoyment. Laugh plus it's make abstract noun, laugher. And move plus meant it becomes abstract noun, movement. Produce plus shun it's become abstract noun, production. हमने इन वर्ब को जब कंबाइन किया सफिक्स के साथ तो हमने इससे बनाए एब्स्ट्रैक्ट नोन. तो दूसरी हमारी टिप यही थी कि हम वर्ब और सफिक्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नोन बनते हैं. तो फर्स्टली हमें ये भी पता होना चाहिए कि नोन कौन से होते हैं, वर्ब कौन से होते हैं, क्योंकि किसी भी शख्स चीज़ जगह के नाम को हमने नोन कहते हैं, जैसे कि हम पहले भी एग्जाम्पल इसमें नहीं है. तो इस तरह जब भी कोई एक्शन लिया जाए, कोई भी वर्क हो, तो ऐसे एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे इंजॉय, लाफ, मूव, प्रोड्यूस भी हमारे पास एक्शन वर्ब है. The third tip is adjective plus fix. So adjectives, as you know, qualify the subject. Here are given adjective example: popular, happy, brave and wise. As you can see, these are the verbs, these are the adjectives describing the subject and also qualifying it. So adjective are given here: popular plus suffix is it. So popular plus it, we combine it become abstract noun, popularity. Happy plus ness and become abstract noun, happiness. Brave plus ry it's become abstract noun, bravery. And wise plus dom is become abstract noun, wisdom. सो इस तरह हमने एडजेक्टिव को जब सफिक्स के साथ मिलाया तो इससे हमने एब्स्ट्रैक्ट नोन बनाया.
इसकी सारी पॉपुलैरिटी और हैप्पीनेस, ब्रेवी, सारी इस टर्म जो है सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रही हैं, तो इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं और इस तरह हमने इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया. लेट्स डू मोर प्रैक्टिस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Practice of abstract noun. Let's take example number 1. I have difficult dash with my brother. We don't get on well. तो इससे हमें पता चल रहा है यहाँ पे सूटेबल जो एब्स्ट्रैक्ट नॉन है वो रिलेशनशिप है. आई हैव अ डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप विद माई ब्रदर. वी डोंट गेट ऑन वेल. नंबर 2. आई ऑलवेज स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स बिकॉज आई हेट द फीलिंग ऑफ डैश. तो यहाँ पे फीलिंग ऑफ डैश मीन्स यहाँ पे हमारे पास सूटेबल एब्स्ट्रैक्ट नॉन है लॉनलीनेस. नंबर 3. आई वेंट बंकी जंपिंग ऑन माई लास्ट हॉलीडे. इट्स अ फन डैश. तो ये फन कौन सा है, यहाँ पे सूटेबल हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नॉन है एक्टिविटी. नंबर 4. सैम पास द टेस्ट. इट वॉज अ ग्रेट डैश. तो उसने टेस्ट पास किया, तो हमारे पास एक हो गया स्टेप नॉन एब्स्ट्रैक्ट नॉन जो कि सूटेबल है अचीवमेंट. सैम पास द टेस्ट. इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. सो dear, I hope you have get the concept of abstract noun, and if you have any confusion you can share with me in your comments. It's no problem, without hesitation you can ask me, because my purpose is to teach you. If you have not the concept, then it is useless for me to give you this lesson. So you can ask me, and see you again with the next concept of grammar. Till then, take care and Allah Hafiz.